So good morning again, guys. So today we are going to discuss the third condition, third type of condition when our column is fixed at both of its end. अब तक हमने जो कंडीशन देखी है उसमें देखा था फर्स्ट कंडीशन कि कॉलम जो है उसके दोनों एंड्स हिंज्ड है. देन सेकंड कंडीशन देखा था कि कॉलम जो है one end of column is fixed and other end is free. Okay, now in this third type of condition of column and condition of columns, we are considering both ends fixed. Okay, हमारा जो कॉलम है उसके दोनों ends जो है वो फिक्स्ड है. that case we are going to analyze today. अगेन जो फ्लो है वो सेम रहेगा, सिर्फ मोमेंट और फोर्सेस के वैल्यूज जो होंगे वो डिफर होंगे. सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट दिस फिगर. सो आवर कॉलम इज हैविंग लेंथ L, and it is fixed at both ends. Okay, so in analysis of beam I showed you that whenever we fix a thing, okay, it generates reaction, okay, vertical reaction, horizontal reaction and moment reaction. Okay, so here we will consider the moment reaction of fixed ends, okay, for analysis. So we have shown here m0, okay, that is reacting moment at both of its ends, means end A and end B. Okay, as usual we are taking point x1 for analysis. Okay, so point x1 is at a distance x from point A and it is deflected by distance y. Okay, so what will be the equation of moment? Okay, and again our column is bending in this direction. Okay, so moment because of the force will be negative. Okay, so what is the moment by developed because of this force? This force multiplied by distance is y, so negative p into y is the moment generated because of this force. Okay, but here we are also having a moment because of fixed ends. Okay, so m0 is the moment at fixed end. Okay, this should be equal to capital M, okay, total moment. Okay, so that is what written over here. M is equal to m0 minus p into y, okay, where p is the critical load. Okay, let me clear things so that, okay, and we know that m is equal to ei d square y by dx square. This thing we know. Divide this equation by e into I. Okay, so we get d square y by dx square plus, okay, this py term we are taking on the left hand side, so this negative will be converted into positive, so plus p and divided by ei y is equal to m0 upon ei. Okay, so this is now also a second order non-homogeneous differential equation, the same that we have seen in द सेकंड केस. ओके, जो हमने सेकंड केस में देखा था जब हमारा एक एंड फिक्स था और अदर एंड फ्री था. ओके, इस केस में जो देखा था वैसा ही सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन है, बट जो ये केस था जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक वैल्यू था स्मॉल ए, पी इंटू स्मॉल ए. ओके, और यहाँ पे क्या है m0 अपन ei. That is the only difference between this differential equation and the differential equation that we have seen in previous lecture. Okay, so according to mathematics, if you take the general solution, our solution will be like this: y is equal to a cos x under root p upon ei plus b sin x under root p upon ei plus यहाँ पे, okay, here is the change. जो हमारी लास्ट ईयर थी, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, वहाँ पे सिर्फ स्मॉल ए था. ओके, यहाँ पे क्या आएगा m0 बाई पी.
ये पी ए अपन ई आई वाला इक्वेशन था. Okay, so here instead of small a we will be having m0 by p. Okay, so that is the difference. So equation number 2 is the general solution of equation number 1. Okay, when you compare these two theories, you will get the idea what difference they are sharing. Okay, so now we are having general equation, general solution y is equal to a cos plus b sin plus m0 by p. Okay, so now to solve this we need 3 boundary condition same as of second case. Okay, so boundary condition कौन कौन सी आएगी? You can see at point A, यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं ओके x जो है वो कितना है 0, तो at x is equal to 0 डिफ्लेक्शन विल बी 0 बिकॉज फिक्स्ड है, सो इट कैन नॉट मूव, सो डिफ्लेक्शन 0 होगा. देन ऑल्सो यू कैन से एट x इज इक्वल टू 0 स्लोप जो है दैट इज dy बाई dx वो भी 0 रहेगा. ओके, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन सेम है प्रीवियस केस के जैसे. ओके, एंड थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या आ सकता है? यू कैन से एट x इज इक्वल टू l, मीन्स एट दिस डिस्टेंस. Okay, you see the end B is also fixed, so deflection would be 0 at x is equal to L. Okay. So this third boundary condition is the change from previous theory. Okay, so we will apply these boundary conditions to get the value of A, B and M0. Okay, so here m0 is also unknown because it is reaction. Okay, reaction जो है वो directly हम measure नहीं कर सकते, that is unknown. So use first boundary condition x is equal to at x is equal to 0, deflection y is equal to 0. So put y is equal to 0 in this equation number 2. So y is equal to 0 and x is equal to 0. So this cos 0 will be 1, sin 0 will be 0 and this will remain as it is m0 by p. Okay, so we get capital A is equal to negative m0 by p. Okay. So using first boundary condition we get the value of A. Okay. Now for second boundary condition, you see for second boundary condition we need slope. Okay, dy by dx. So we will differentiate this equation number 2. Okay, so by differentiating this equation y की जगह y, if I differentiate y with respect to x, so differentiation will be dy by dx. Okay, and differentiation of this term a cos bracket x under root p by ei. Okay, cos का differentiation आता है negative sign. Okay, so negative over here, sin as it is, and bracket के अंदर का जो term है उसका differentiation under root p by ei. Okay, so differentiation of this term, actually this whole term, okay, differentiate this also. Okay, b sin का differentiation होता है simply cos x under root p अपन ei and x इसका differentiation लगेगा again under root p अपन ei. Okay, and this third term is actually constant. Okay, so it will be 0. So now you are having the equation of slope. So use the second boundary condition, that is at x is equal to 0, dy by dx is equal to 0. So use this thing in this differential equation. Okay, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy by dx जो है वो 0 हो जाएगा at x is equal to 0. So if you substitute x is equal to 0, तो साइन जो है वो 0 हो जाएगा, मीन्स ये जो पूरा पहला टर्म है वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है. एंड दिस टर्म cos 0 इज 1. ओके, सो ओनली रिमेनिंग थिंग विल बी 0 इज इक्वल टू b अंडर रूट p अपन ei. सो इफ़ यू टेक अ लुक एट दिस, ओके, ये जो हमने सेकंड केस डिस्कस किया था वैसा ही यहाँ पे इक्वेशन का सॉल्यूशन आया. सो अगेन यू कैन टेक हियर b इज इक्वल टू 0. Why you can take this I already explained in my previous lecture. Okay, so we will take b is equal to 0.
So we have utilized the second boundary condition also. Okay. So now turn is for third boundary condition, that at x is equal to L, again deflection is 0. Okay. So ये जो भी वैल्यू है, a की वैल्यू है, then b की वैल्यू है 0. Okay, this value will substitute in this equation number 2. So a की जगह पे आएगा नेगेटिव m0 बाई p, b इज इक्वल टू 0, तो ये जो पूरा टर्म है वही 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, बस m0 बाई p. ओके, सो दैट इज़ माई रिमेनिंग इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, y इज इक्वल टू नेगेटिव m0 बाई p cos x अंडर p बाई ei प्लस m0 बाई p. Okay, now I will use the third boundary condition, that at x is equal to L, y is equal to 0. So substitute y is equal to 0 and x is equal to L in this equation. Okay. So you will get this equation, 0 is equal to m0 by p in bracket 1 minus cos L under root p upon ei. Okay. So now how we will solve this equation, how we can solve this? Okay, so if you see on left hand side 0, on right hand side we have some value. Okay, so to balance this equation, ये वैल्यू 0 कब आ सकता है? okay, जब ये जो टर्म है वो 0 हो जाए. अभी ये टर्म जो है वो 0 कब हो सकता है? दिस इज 1 माइनस कॉस L अंडर रूट P अपन EI. ये टर्म मुझे 0 करना है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए. ओके, सो 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0. ओके, सो 0 मल्टीप्लाई बाय m0 बाई p विल बी इक्वल टू 0. सो दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड. सो व्हाट आई नीड, cos इन ब्रैकेट L अंडर रूट P अपन EI, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू 1 आना चाहिए. ओके, सो आई एम टेकिंग cos L अंडर रूट P अपन EI इज इक्वल टू 1. ओके, अभी cos थीटा 1 कब आता है? cos थीटा का वैल्यू 1 आता है 0 पे एंड 2 पाई पे. ओके, ये दो वैल्यू है जब cos थीटा का वैल्यू 1 आता है. cos थीटा इज इक्वल टू 1 when थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई. So if you take theta is equal to 0 over here, so what it indicates, L under root P upon EI is equal to 0, ऐसा हो जाता है. Okay, so if you solve this equation, so you will get P is equal to 0. Okay, so ये क्या कह रहा है कि लोड 0 होगा तभी भी मेरा कॉलम फेल हो जाएगा. Okay, so that is not possible. अगर कोई लोड नहीं लग रहा है तो मेरा स्ट्रक्चर ऐसे कैसा खड़ा रहेगा. Okay, so I cannot take value of theta is equal to 0. Okay, so I am taking theta is equal to 2 pi. Okay, so that is why I have taken theta is equal to 2 pi over here. Okay, so L under root P upon EI is equal to 2 pi. Take square on both of the side. Okay, so we will get L square P upon EI is equal to 4 pi square. Okay, do the simplification, so you will get the equation P is equal to 4 pi square EI upon L square. Okay, so this is the equation for condition when both of the ends are fixed. Okay, now you must keep track on the previous equations also. Okay, previously हमने कौन कौन से equation derive किए हैं. P is equal to pi square EI अपन L square. और एक इक्वेशन था P is equal to pi square EI अपन 4L square. okay, so ये जो इक्वेशन था pi square EI अपन L square, that was for both ends hinged for a column. ये जो इक्वेशन था पाई स्क्वायर अपन 4L स्क्वायर, दैट वाज फॉर कॉलम विथ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री.
and this equation 4 pi square ei upon L square, this is for a column which is having both of the ends fixed. So if you compare these three equations, you see maximum load कौन support कर सकता है. You see this 4 times pi square ei upon L square. So जब भी column के दोनों ends fixed होते हैं, that column can support maximum critical load. Okay. बाकी सारे जो column है वो उससे पहले टूट जाएंगे. Okay. So now you know कि why हमारे घर में buildings में ये वाले columns यूज होते हैं, which is having both of its end fixed. Okay. Because they can take maximum critical load. Okay. 4 times pi square ei upon L square. So that's it for today. Okay. We will see the next and last theory in our next lecture. Okay. Thank you for watching.